Hi guys, my name is Harsh Goela and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. Now in my recent video on how to do market research, if you haven't seen that video, मैं video suggested में छोड़ने वाला हूँ, be sure to check it out. अब उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में a lot of people requested me, sir, make a video on price earning ratio. Sir, what is P ratio? Sir, I use P ratio but it did not work well for me. Sir, P ratio is not good. So today, let's discuss what is price earning ratio, why is PE ratio, why is it considered to be one of the most important tools, how to calculate PE ratio, and what are the mistakes that people make. The common mistakes that people make while considering price earning ratio, because price earning ratio के भी बहुत myths हैं और बहुत लोग उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं. And at the end, my friends, at the end, I'm going to give you a bonus gift. Yes, bonus gift. उस गिफ्ट के बिना मत जाना, बिकॉज उस गिफ्ट से ना यू विल स्टार्ट effective execution, effective, precise, quick execution. That bonus will help you do that. Why? Because again, planning, strategy, everyone can teach. But here to all our students, we always say effective execution. अगर आपने execute नहीं किया, सिर्फ plan करते रह गए, there's no point of it at all. Right? So let's understand price earning ratio. Now let's take a case study. Let's take an example. Let's take example of a burger stand. ये स्ट्रीट फूड है, ये बर्गर स्टैंड है इसका. नाउ ही कम्स टू यू एंड ही टेल्स यू, हैंड राइटिंग माइंड मत करना, आई नो हैंड राइटिंग इज क्वाइट बैड. ओके, नाउ ही कम्स टू यू एंड टेल्स यू दैट सर, माई सेल्स एवरी मंथ इज 10,000, माई रेंट every month is 4,000, and my cost of goods sold, that is COGS, right? Cost of goods sold is 3,000. So every month, how much is he earning? 3,000 per month. ठीक है, simple है. Right? Now, if you enjoy the burgers too much, यहाँ पे आप जाते हो, आप बहुत enjoy करते हो, and you ask him कि अच्छा यार, what are your financial sheets, आप कितना कमा लेते हो, and he tells you that sir, महीने में I do a sales of 10,000, rent I have to pay of 4,000, and cost of goods sold of the raw materials, of the buns, of the lettuce, of the patties, of the equipment to cook with is 3,000. Then how much profit is he left with every month? 3,000 rupees per month. सही है? Now, if he comes to you and tells you that sir, एक काम करो, buy my entire business at 15,000 rupees, and how much is he earning? 3,000 per month. Right? Now assuming these factors will remain the same and he will always around 3,000, what will you think before making a decision of buying and selling this property? Buying or not buying? क्या आप इस बर्गर स्टैंड को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? सिंपली आप क्या करोगे? ओके, 15,000 मांग रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3,000, विच क्लियरली शोज दैट आफ्टर 5 months, इन 5 months यू विल हिट योर ब्रेक इवन. आपका ब्रेक इवन, आपके पैसे वापस आ जाएंगे, एंड अबव 5 months क्या है आपका? प्रॉफिट. एम आई राइट? यही कैलकुलेशन होगी माय फ्रेंड. यहाँ पे आपने खुद प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल लिया है. The PE ratio is the price upon the earnings. Simple. 15,000 the price, 3,000 is the earnings. Simple. Before entering a business, before doing anything, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, if मुकेश अंबानी स्टार्टिंग जियो, सबसे पहले वो क्या देखेंगे? द प्राइस अर्निंग. वाई? कि अगर मैं इतना सारा पैसा डाल रहा हूँ, कितने टाइम बाद मेरा पैसा वापस आएगा और कितने टाइम बाद आई विल गो इनटू प्रॉफिट. When will I hit the break even point? आप समझ रहे हो? Where expenses and revenue match, that is the break even point. Simple. अब हम समझ गए प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है. Now let's understand, if suppose everyone wants to buy a burger stall, everyone loves burgers, सबको burger stall खरीदना है, and this person tells you, okay sir, do one thing, buy my shop at 90,000. From 15,000 he's directly selling at 90,000. Why? Because everyone wants to buy a burger stand. Demand बहुत ज़्यादा है, supply कम है, तो obviously he will sell it at 90,000. So if he sell at 90,000, then what's the PE? I divide by 3,000. It is 30 months.
प्रॉफिट होगा 30 मंथ्स के बाद. नाउ इज दिस वर्थवाइल बाइंग? शायद नहीं. In an opposite situation where nobody wants to buy a burger stand, nobody wants to look at a burger stand, that person tells you that, sir, please buy my burger stand shop at 4,000 rupees. Now अगर आप इसकी प्राइस अर्निंग करोगे तो this is actually less than 1.5. Then is it worth buying? Definitely yes. This is what the price earning ratio tells you. अब इसको जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहे कर सकते हो, बट प्राइस अर्निंग टेल्स यू कि जो आप चीज़ खरीद रहे हो, अगर मैं ये पेन खरीद रहा हूँ, ये वर्थ इट है कि नहीं है. ऐसा होता क्या है ना, जब व्हेन मार्केट्स आर बूमिंग, व्हेन मार्केट्स आर पीकिंग, जो 15,000 का शेयर है वो आपको मिलेगा कितने का? 90,000. एंड पीपल बाय इट थिंकिंग इट एज अ बार्गेन. एंड व्हेन मार्केट्स क्रैश, वही चीज़ आपको जब 4,000 की मिलती है, नोबडी बाइज इट. अब देख रहे होता क्या? And when are you supposed to buy it? You should definitely buy it when the PE is at the lowest, when you are getting it at the lowest price. इसको हम बोलते हैं overvalued, undervalued. अगर कोई शेयर आपको इस रेंज में मिल रहा है, then it's perfectly valued. If you find the share coming in the range of this, मैं again एक example के basis में समझा रहा हूँ, it's undervalued. अगर वो 90,000 के रेंज में चल रहा है, it's extremely overvalued. P का सिंपल सोल्यूशन है, द P का बेसिक कॉन्सेप्ट है, द लोअर द प्राइस अर्निंग द बेटर इट इज, द लोअर द P द बेटर इट इज, राइट? तो यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, द बेसिक ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो. नाउ अगेन, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस फॉर अ कंपनी? नाउ अगर मैं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आर यू बाइंग द एंटायर रिलायंस इंडस्ट्रीज? नो. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द PE? नाउ सिंपल फंडा क्या है? PE इज प्राइस अपॉन अर्निंग. अब I am buying one share, so simply I will find price of one share upon earnings of one share. तो इसको हम बोलते हैं EPS भी बोलते हैं, which is called earnings per. Okay guys, मेरी handwriting में काफ़ी ख़राब आती है, so please mind that. Okay, earnings per share, जो आपने काफ़ी commonly सुना होगा. Simple. Price पर शेयर क्या है हमें पता है, ऑब्वियसली दैट इज द प्राइस यू बाइंग दैट शेयर, दैट इज द करंट मार्केट प्राइस. व्हाट इज अर्निंग्स पर शेयर? EPS इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, कंपनी का पूरा कितना मुनाफा हो चुका है, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. सिंपल. तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड द EPS. Now again, in our day and age, do you need to calculate this? Never. You don't need to calculate this. हर चीज़ हर जगह available है. But still, I'm going to explain to you. Why? Because I believe आपके basics should be clear. वरना हम क्या करते हैं, हम रट्टा मारते ही रह जाते हैं. So you should understand P निकलता कैसे है. So if I just give you the क्या कहते हैं, the initials of the price and earning, you should be in a situation कि आप खुद PE निकाल लो. Once you understand that, once you understand the calculation of that, then you yourself you can decide is it good or bad. तो इसमें टिप्स और रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? चलो, वी अंडरस्टूड व्हाट प्राइस अर्निंग रेशियो इज. नाउ अच्छा, टेल मी दिस, इफ मारुति का PE इज 27 एंड इफ आइडिया PE इज 18, देन व्हाट कंपनी शुड यू बाय ओनली ऑन द बेसिस ऑफ PE? प्राइस अर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? द लोअर इट इज द बेटर इट इज. तो यू शुड डेफिनेटली बाय दिस कंपनी आइडिया on the basis of PE, right? Wrong. Absolutely wrong. Why is this? Simple funda. We cannot compare price earning ratios of two different industries. हम नहीं कर सकते. क्यों? हर इंडस्ट्री का अर्निंग बहुत सेपरेट है, हर इंडस्ट्री का अर्निंग बहुत यूनिक है. अब इफ यू टेक मारुति फॉर एग्जाम्पल, मारुति एन ऑटोमोबाइल सेक्टर इज मेकिंग दैट कार एंड आफ्टर 7-8 months दैट कार इज बीइंग सोल्ड. एम आई राइट? बट फॉर आइडिया, डू यू थिंक वो सर्विस कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, इट इज गिविंग अ सर्विस विच इज गेटिंग पेड फॉर इमीडिएटली. और काफ़ी केस में तो आइडिया प्रीपेड होता है. आप डिफरेंस देख रहे हो? फॉर अ बिल्डर वो पूरा प्रोजेक्ट बनाएगा, आफ्टर 10 years ही विल गेट द रिटर्न ऑफ दैट एंटायर प्रोजेक्ट. बट फॉर कोका कोला इट विल प्रोड्यूस दैट कैन एंड 2 months के बाद कैन इज सोल्ड. सो PE फॉर एवरी सेक्टर इज डिफरेंट. दिस इज द मिस्टेक दैट पीपल मेक. वाई? होता क्या है, we compare Maruti and Idea and we buy Idea thinking Idea better है क्यों PE better है. नहीं कर सकते. What we can do is we can compare Idea and Airtel.
हम सेम इंडस्ट्री की कंपनीज कंपेयर कर सकते हैं. दैट इज वॉट वी कैन डू. सो इफ आइडिया का पीई इज 18 एंड एयरटेल का पीई इज 21, देन व्हाट कंपनी शुड यू बाय? आइडिया. नाउ यहां पे पी का एग्जीक्यूशन परफेक्ट है, पहले वाले केस में परफेक्ट नहीं है, राइट? तो हमें समझा पी क्या होता है, कैसे निकलता है. वी टुक अ केस स्टडी ऑफ दैट बर्गर स्टैंड. अब आते हैं, हर्ष आप बोलोगे सर हाउ डू आई नो द पीई ऑफ एवरी सेक्टर? हर सेक्टर की, लाइक आई टोल्ड यू, हर सेक्टर की प्राइस अर्निंग रेंज डिफरेंट होती है. हाउ डू आई नो द पीई ऑफ एवरी सेक्टर? क्या मैं हर सेक्टर खोल के बैठ के देखूँ, ये करूँ? Here is the time we give you that bonus gift, my friend. ये काम आपका मैंने और आदित्य ने ऑलरेडी कर लिया है. बोनस गिफ्ट में आपको क्या मिल रहा है? आई एम गोइंग टू गिव यू दिस शीट जहां पे मैंने सारा एनएससी और बेसिस डेटा सोर्स किया है एंड इट्स गिविंग यू द पीई ऑफ एवरीथिंग. नाउ आई हैव कंपाइल्ड ऑल द सेक्टर्स दैट आई कुड. निफ्टी, निफ्टी जूनियर, मिड कैप निफ्टी, देयर इज ऑटो, देयर इज फाइनेंस, देयर इज आईटी, देयर इज पीएसयू बैंक्स, मीडिया, मेटल, फार्मा, एनर्जी. तो जो भी आपका शेयर है किसी सेक्टर में फॉल करता होगा, उस सेक्टर का आप देखो पीई रेंज क्या है. सो सपोज द पीई, लेट्स टेक ऑटोमोबाइल सेक्टर. लेट्स टेक ऑटोमोबाइल सेक्टर. तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का लोवेस्ट पीई इज 8 एंड हाईएस्ट पीई इज 27. लोवेस्ट पीई इज 8, हाईएस्ट इज 27. इसका मतलब क्या है? जब इसका मतलब ये है व्हेन द पीई इज एट 8, आपको वो बर्गर स्टैंड 4,000 रुपए का मिल रहा है. देन शुड यू बाय और शुड यू सेल? यू शुड डेफिनेटली बाय. And when PE of automobile sector is at 27, it means कि वही burger stand आपको कितने का मिल रहा है? 90,000. Should you buy or sell? You should sell. So जब आपका sector or whatever investment you are making, if it's near the lower side of this PE ratio, then you buy. If it is near the higher limit, then you sell. Simple. अगर आप सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करोगे, यूज दिस स्ट्रैटेजी इन इन्वेस्टमेंट. सो आई एम श्योर यू ऑलरेडी मस्ट हैव इन्वेस्टेड मनी. चेक करो प्राइस अर्निंग हिसाब से एंड टेक द राइट प्रॉपर गाइडेंस. वेयर कैन यू फाइंड द एक्सेल शीट? नीचे लिंक में मेंशन है. इट्स अ डाउनलोडेबल लिंक. क्लिक करो, डिटेल्स भरो एंड टेक दिस एक्सेल शीट. दिस एक्सेल शीट was exclusively for our students, but because हम students को पूरा टाइम exclusive content देते हैं, to give you tools that make life easier for you. राइट. सो आर इंटायर मिशन, जब कोई हमारा कोर्स ज्वाइन करता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट का काम एकदम हल्का कर दो. रिसर्च का काम सारा मैं कर रहा हूँ. मुझे आपसे क्या चाहिए? आपका टाइम और थोड़ा सा एफर्ट. बाकी सारे टूल्स हम आपको देते हैं. सो इफ यू ओपन एनी ऑफ दिस टैब्स, इफ यू ओपन फाइनेंस, यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स हियर, राइट. सो एनी टैब आप खोलोगे, यू कैन फाइंड एवरीथिंग. इस शीट को डाउनलोड करो. दिस इज द बोनस आई एम टॉकिंग अबाउट. Now you're not only doing planning, you're not only doing strategy, you're actually using and executing price earning ratio to the perfect way. अब देख रहे हो how to move forward, right? So I hope you like the video. इतना अच्छा बोनस है, like जरूर करना, right? Share the video, like the video and कमेंट सेक्शन में लिखो व्हाट एल्स डू यू वांट. ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स, व्हाट अदर टॉपिक्स वेर यू वांट, एंड आई विल गिव यू बोनसेस, आई विल गिव यू टूल्स जिनसे आपका effectiveness बढ़ जाएगी. तो you will start executing them, not only planning and strategy part, you will also start executing them. So tell me small concepts. Again, don't ask me, a lot of people have asked me. First of all, thank you so much for asking. That's how to do fundamental analysis. My friend, ये बहुत बड़ा concept है, ये एक वीडियो में नहीं आएगा. तो अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, कोई और रेशियो आपको पूछना है या कोई आपको टर्म पूछना है या कुछ कॉन्सेप्ट आपको पूछना है, प्लीज़ गो अहेड, आस्क मी. कमेंट सेक्शन में सारे पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझसे पूछो एंड आई विल बी श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट नेक्स्ट टाइम. आई होप यू एंजॉय द बोनस. बोनस को डाउनलोड करना मत भूलना. दिस इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर योर एग्जीक्यूशन ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो. सो अगर कुछ भी डाउट हुआ प्राइस अर्निंग के बाद, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी डाउन. दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, financially empowering you.